27th October 47, first sea under the command of Lieutenant Colonel Diwan Ranjit Rai landed at this airport, at this airfield. The Indian Army, men and women of Kashmir, brave soldiers of Jammu and Kashmir State Forces showed great courage and bravery, forcing the enemy to withdraw and eventually evicting them and saving Kashmir. Chinar Corps of Indian Army and Western Air Command on this 75th anniversary has attempted to commemorate this historic event of air landing operations. I fully believe that you must have enjoyed each and every moment of this reenactment. History should never be forgotten, lest it shall be repeated. The people of our country, and particularly Jammu and Kashmir, should remember that when the guards are down, the enemy of humanity will prey on innocents. The memory of unilateral violation of standstill agreement, the rape, murder, loot and arson at Baramulla and other villages and towns of Jammu and Kashmir may seem distant for the current generation and well forgotten. But the enemy of our wonderful nation continues to be devious and evolving in different forms and formats, attacking us through subcommunal domain in both physical and mind space. So this reenactment is a grim reminder to those who have forgotten the miseries brought upon their elders, the sacrifice of brave Kashmiris who defended the honor against brutal and unethical force. Let us honor and remember the gallant soldiers of Indian Army and Indian Air Force who risked all on this day to land at this very ground zero in face of the enemy to serve and save the honor of the nation and unprotected people of Kashmir. It's my great pleasure to be here today for this historic occasion, the 75 years of Budgam landing, in which after the instrument of accession was signed, we moved in quickly our troops. Srinagar airfield was saved, and thereafter we could launch a further offensive and push the Pakistan military, which came as Kabylis, further back. I am sure if the UN had not intervened, perhaps the entire Kashmir would have been ours. It was not only IAF and Army's participation in Budgam, but there were many small missions which were carried out, which has resulted in ensuring freedom of free Kashmir. What I'm reminded of is one of the seizures of Poonch. People who had come from Pakistan, who had migrated from Pakistan, they built an airstrip at Poonch in 7 days, and without much of mechanical support, and which had resulted in our aircraft landing in Poonch and saving entire Poonch, an entire area of, which is other side of Banihal and Pir Panjal. We also carried out attacks in Srinagar airfield till the fuel ran out by fighter aircraft. We also carried out attack at Skardu, without which, in fact, that attack at Skardu was at ammunition dump, and that mission was being monitored by General Timaya from the air. And it is very interesting to what he claimed when he saw this whole ammunition dump blowing up. We also activated Leh during that period by Meher Singh. And all these activities which were carried out by Indian Air Force and Army actually has resulted in ensuring the freedom of this part of Kashmir. And I'm sure someday the Pakistan-occupied Kashmir will also join this part of Kashmir, and we will have a whole of Kashmir in years to come. Thank you and Jai Hind. Indian Air Force has built over the years 1970. Indian Air Force came into being in 1932, with one squadron being formed in 1932, and most of the squadron came into being only in 1939-40, towards the end of Second World War, as Royal Indian Air Force. When India got independence, that is the time the Air Force was a very fledgling force when compared to our Army or Navy. But in short period of time, from then to 47, we made a remarkable difference, and since then in every war, whether it was 47-48, whether it was 65, whether it was 1971 war or Kargil war, in every war we had made the difference. And we have become a very capable force
and the years to come we will continue to serve the nation with honor. Thank you. What are the challenges that Indian Air Force face at present? Indian Air Force faces many challenges. The basic challenge that we face is of technology. The rate of change of technology is so fast in the world today that we have to keep pace with that. And if any nation which is to grow economically has to have a strong military, and we must do and fulfill our obligation to the nation in the years to come, for which we are always ready for the challenge. देखिए, ड्रोन के अटैक्स जो है बहुत ही छोटा अटैक है और बहुत ही कम डैमेज कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमने इक्विपमेंट पहले से ही तैयार कर रखा था। उसको यहाँ पर पहले डिप्लॉय भी किया गया था। अब उस डिप्लॉयमेंट को फर्दर हम बढ़ाते हुए और प्रोक्योरमेंट करके और जगह हमने डिप्लॉय किया है। एंड ड्रोन चैलेंज जो है बहुत छोटा चैलेंज है, एंड वी विल बी एबल टू डील विद दैट चैलेंज एज एंड व्हेन इट कम्स। आज से तुम हमारा मदद करेगा। छोड़ दो उसे, उसे क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जाने दो उसे, जालिमों, छोड़ दो उसे, छोड़ दो इसको। चुप कर, चुप। सिस्टर रोजी, ये क्या किया आपने? रोजी, सिस्टर रोजी। ओए चुप कर, नहीं तो मैं तुम लोग को भी गोली मारेगा। चुप कर, ओए चुप कर, ओए खबीस, चुप कर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। In the opening salvos, मकबूल शेरवानी का। ओए अच्छा है। ओए हमको बोलो, हमको वो श्रीनगर जाता। किधर से जाता बोल? श्रीनगर? आप श्रीनगर नहीं जा सकते। ओए क्यों नहीं जा? एक ही रास्ता है वहाँ जाने का। वो पीछे वाली पहाड़ी से वो। ओए तुम्हारा मतलब वो उधर से जाने का? हाँ उधर से। ओए ठीक है खुद। ओ चलो तुम लोग चलो। ओए आ जाओ चलो। ओए चलो। इस तरह से पाकिस्तानी फौज और कबायली गलत रास्ते पर चले गए और भारतीय फौज को कश्मीर पहुंचने का वक्त मिला। लेकिन बदकिस्मती से इस बहादुर नौजवान की तरकीब कबायलियों को पता चल गई और वो मकबूल शेरवानी को पकड़ने में कामयाब हो गए। ओए खबीस, पठान को धोखा देता है। खबीस का बच्चा झूठ बोलता है हमसे। चल खबीस, चल खबीस, चलो खंजीर का बच्चा, चल। खबीस का बच्चा झूठ बोलता है। आज तुम्हें सीधा जानम पहुंचाता है। जानम ही तो तुम लोग हो। हमारी आर्मी आ गई है। इंडियन आर्मी तुम लोगों की ईद से ईद बजा देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल खंजीर का बच्चा, बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल खंजीर, बोल। नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा। ये मुल्क मेरी जान है।
इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और जान कुर्बान है। An untold story of an extraordinary valor of a 19-year-old Mohammad Maqbool Sherwani, who single-handedly thwarted the advance of thousands of raiders and gave valuable time to the Indian Army to land at Srinagar. Son of Baramulla, Mohammad Maqbool Sherwani. श्रीनगर के लोगों ने बारामूला की खबर सुनते ही अपनी हिफाजत और सेल्फ डिफेंस के लिए सिविल फौज कबायलियों के खिलाफ तैयार कर ली, जिसमें जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक अहम किरदार था। दुनिया के इतिहास में ये लिखा गया कि कश्मीरी औरतों ने अपने डिफेंस के लिए, जिसका नाम वुमेन सेल्फ डिफेंस कोर रखा गया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसने कश्मीर की महिलाओं को एकजुट कर दिया। इस ऐतिहासिक पल ने हर धर्म जाति की महिलाओं को एक साथ लाकर एक लक्ष्य के लिए अग्रसर कर दिया। कश्मीर की महिलाओं ने एक मकसद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए हथियार उठाए। इस इतिहास को एक लोकल न्यूज़पेपर में यूं लिखा गया: दुनिया के इतिहास में पहली बार कश्मीर की औरतों ने एक फौज तैयार की जिन्होंने राइफल्स चलाने में ट्रेनिंग ली। ये एक ऐसी मिसाल है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को एक ऐसा मोड़ दिया। Ladies and gentlemen, never in the history of warfare was such an airlift undertaken with so little notice and planning. A historic moment, ladies and gentlemen. Against all सर थोड़ा प्लीज पीछे जाओ, यहीं पे होगा, आपके पास आ जाएंगे फ्री, डिस्टर्ब हो जाएगी। जो कश्मीरी लोग थे उस समय उन्होंने स्वागत किया था यही जज्बा सर प्लीज शुक्रिया शुक्रिया। अब फौज आ गई ना, अब हम शांति से रह सकते हैं। फौज अब हमको बचा लेगी। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ मेरे बहादुर शेरों, आज वो घड़ी आ गई है जिसका हर फौजी इंतजार करता है। दुश्मन साडे नेड़े आ गया है, सारे कमर कस लो ते दुश्मन दे दंद खट्टे करन लई तैयार बर तैयार रहो। एक बारी गज के मेरे नाल जकारा बुलाओ। I don't know what effect these men will have on the enemy, but by God, they terrify me. Ladies and gentlemen, these brave hearts will be slipping down for us today. First out we have Naib Subedar Tilak Raj. Glittering down.
right behind. Nice in red. And last but not the least, Paratrooper Kailash. Ladies and gentlemen, this unique military action uses hard intelligence, sophisticated equipment, and rigorously trained and motivated. Let's see the special forces steadily moving towards the advanced light helicopter. तिरंगे की आग का है कुछ नशा, तिरंगे की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। Ladies and gentlemen, the inspection of 4 Para Special Forces in progress right now. वो जो मुश्किलें बदतरसी, उनसे लड़ने का जज्बा बर्वक्त सा होना चाहिए। तुझे रोके जो चिंगारी, तेरे भीतर ज्वाला दहकनी चाहिए। They believe in this core spirit. Ladies and gentlemen, the Indian Army, the 4 Para SF. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the 207 Army Aviation Spawn and the elite 4 Para Special Forces. जिनको पोस्टमसली महावीर चक्र का एहसास दिया गया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय। श्रीनगर में युद्ध का तनाव बढ़ता गया। श्रीनगर और श्रीनगर एयरफील्ड को बचाने के लिए कमांडर 161 वतन की पासबानी पर आजादी के शहीदों के साथ साथ कश्मीर के